how to show devotion so that we should learn Kriyayoga meditation. If you are not having proper devotion, Kriyayoga meditation will be difficult. If you have real devotion, you will find this is the easiest of easy subject. This is the most easy subject and complete, because within this you will find all. What is the proof? Lahiri Maharaj demonstrated that he is able to stretch himself. He was sitting in his office. At the same time, he was able to stretch himself up to the London. He did work and returned back. Example, it is true or false. I give this region, there is a rubber. You can stretch rubber, and rubber will also turn to its original position. You can demonstrate stretching of rubber. After rubber is stretched, and you can bring it back. We human beings, having this same power and more power. Through the Kriyayoga meditation, you can stretch yourself from one point to anywhere if you want. And Lahiri Maharaj also demonstrated that he is having power to reappear, disappear. When he was searching some book in the upper story of his home, Varanasi, the honorable wife came. She was having complained that you are busy all the time with your disciples. You are not fulfilling your responsibility. You are not looking after me and children. Immediate. Lahiri Maharaj disappeared, became invisible, and she starts crying. When she repeatedly requested, wife of Lahiri Maharaj requested, please forgive me, I have done mistake. Again he reappeared, and he said, here all desires will be fulfilled, do not worry. It means he demonstrated how to reappear, disappear. Lahiri Maharaj demonstrated how to stretch himself up to any place and return back. This is called the effect of Kriyayoga meditation. Mahatma Baba is the perfect, complete master, and he gave that teaching, and he advised Priyanath Kadar, who became Swami, Swami Teshwagiri, to write the teaching of Mahatma Babaji. What is teaching of Mahatma Babaji? East and West together, state of yoga. East and West together, if you practice East and West together, automatically you will realize North and South together. Practicing North-South together is not allowed in the beginning. It is allowed for those who have reached to the higher stage of consciousness. Therefore, Mahatma Baba guided to write a spiritual text in that how to bring East, West together. And he said East means Sanatana Dharma, Vedic education. West means this is the teaching of the Western country, means a scientific teaching. How to bring science and spirituality together. And in the West also, East exists in the form of teaching of Jesus Christ. What's in the Bible? Biblical truth. I die daily. I die daily. I arise daily. The science of departure, science of disappearing, science of death,
science of arising. You can die at will, you can arise at will. This is the main teaching of Bible. This is the same teaching. What is the teaching of Kriyayoga science? And if you say it is not possible, then not possible. You can say it is not possible. First try it. I tried many years, but I am not able to demonstrate it. Okay, what is the proof that I am trying? If I try with my all power of mind, with all power of logic, with all power of senses, with my all existence, in the process of trying, if I feel joy, that's called devotion. If I try, I feel stress. It is my devotion is incomplete. Keep on trying, feeling more and more joy. We practice how to try in the best way. What we experience bliss, ever new joy. That's called the perfect devotion. If you reach to a stage of perfect devotion, how to practice Kriya Yoga, then you will say exactly this, what Lahiri Master demonstrated. You can stretch yourself if you are in Prayagraj at the confluence of holy Ganga, Yamuna and Saraswati. You are at the bank of these holy places, holy Ganga and Yamuna and Saraswati. Then you can think like this. From here, you can learn this science, you can stretch yourself to anywhere. You can return back. Or you can disappear here, you can reappear anywhere. This is all demonstrated by Lahiri Master. Not only Lahiri Master, Jnanatarik Teshagiri also demonstrated. Lahiri Master demonstrated many times. Teshagiri demonstrated few times. What is about Paramahansa Yogananda? Lahiri Master never promised, I will keep on coming. Teshagiri never said, I will keep on coming. It is Lord Krishna, Yogeshwar Krishna. It is Paramahansa Yogananda who said, I will keep on coming on this planet. If one person is left behind, I will come for one person. Because of this promise, Paramahansa Yogananda requested to Divine Mother, now release from me, from this visible form. I want to experience my existence as an omnipresence so that I can reach to everybody. And also said, India, do not worry, I will be there. Then Yogananda will be in two dimensions. First in visible form, second as an omnipresence consciousness. How to recognize Paramahansa Yogananda in visible form? It is not easy. If you have 100% devotion in Paramahansa Yogananda, then you will recognize him, otherwise not. How to show 100% devotion in Paramahansa Yogananda? The moment you believe in the teaching of Yogananda, oh, I believe in teaching, I subscribe Yoga lessons, SRF lesson, I have purchased all books of Yogananda, I am dedicated. Okay, this is one dimension of dedication. Complete dimension of dedication is to practice Kriya Yoga and to demonstrate this effect that nothing is impossible. And what we have to do? By practicing Kriya Yoga, wherever you are, at present we are at the bank of Holy Ganga. That is the road, this road is called Mahatma Gandhi Road.
at the junction of east and north, Ishan Pole, there is holy banyan tree where Mahatma Baba manifested in 1894 and blessed Priyanath Kadal, gave him title Swami and advised to write holy signs, and also said somebody will come to him and it's a duty of Swami to train him for the best. Paramahansa Yogananda, before meeting Iktesagiri, he was expert in Kriyayoga meditation. He was knowing how to die at will, how to arise at will. He demonstrated many times. Then why he came to Iktesagiri? Because he was not having complete knowledge how to dissolve ego. In order to learn the science of dissolving ego, transformation of ego into omnipresence consciousness, he has to live 10 years with Swami Iktesagiri, and he did. Then he was knowing how to become eternal humble, because in Western country you cannot teach others. As Iktesagiri was teaching to Paramahansa Yogananda, how many times he scolded him? Read chapter number 12. Paramahansa Yogananda said many times, his scolding was so powerful, I used to shiver sometimes, very difficult to tolerate. After that he learned, in order to have quick transformation, it was important. In order to dissolve ego quickly, it was important. Therefore, Swami Iktesagiri's all spiritual scolding was very effective for Yogananda. After that, he attained the height of eternal humbleness. Then he reached United States of America. Already, Swami Vivekananda, the spiritual giant, already he announced, already he gave future that someone will come from India who will spread this message, universal unity to all. Then what I want to say today, one important point more. Generally you know what I try to explain. A state of yoga. Yoga means absence of distance. Absence of distance on the platform of idea, on the platform of thought and concept, on platform of visual. Then how to understand it? I explained many times. Take English alphabet, A to Z. Each and every letter is having the same idea, thought and concept. It means A and B both represent the same. A, B, C, D up to Z. Z means Z. Idea, thought, concept behind each letter is the same. When you combine 2 letters, 3 letters, 4 letters, we get something which we call W-O-R-D, word. Therefore, idea, thought, concept behind all words is same. I am trying to explain it for many years. Once I was explaining it, one very great saint in the form of judge of the largest high court of the world, Allahabad, he just pointed out, okay, all right, but suppose that if I say something, H2O, what meaning of H2O? Try to understand hydrogen, oxygen, go into the depth. You will find immortal consciousness is manifesting in the form of hydrogen, oxygen. Both combined together is immortal.
If we throw water in the fire, we cannot kill. Take the heat from the water, water transform into ice, we cannot destroy. Practice electrolysis, water transform in the form of hydrogen, oxygen, there is no death. This means it is proved water is eternal, immortal. In the same way, all words combine different letters, try to create infinite number of words, sentences, meaning of all is the one. But it is difficult for majority to understand. How to give a concrete idea. That understanding should be very clear, because head to toe is charged by ignorance. Ignorance with the help of ego is creating confusion. Ignorance is very powerful. What Mahatma Baba explained, what is the meaning of ignorance? Try to see in this holy science. Ignorance means atom. Atom means something which you can measure. That's ignorance. Atom is something which is explained as Brahmarandra, which is explained as Sushumna, which is explained as most important thing, Kutir, which is Brahmarandra, Sushumna, Kutir, which is called the fourth heaven. In this it is explained that this Sushumna is called fourth heaven, and one try to enter into Sushumna, what you will find? Chitta, Chitta, ego, wisdom and mind. We are caught in the network of wisdom and mind, Chitta and ego. We are revolving in this sphere of illusion. That's called ignorance. Each of us is fully charged with the ignorance. How to get rid of ignorance? Ignorance with the help of ego, with the help of wisdom, with the help of mind, with the help of sense organs, is creating a lot of illusion. What is illusion? I see your height, your mass, your weight, your volume, your color. This is not true. What Mahatma Baba explained, Param Brahma is all in all. Brahma, Param Brahma. Whatever we have concept about Brahma, there are infinite number of Brahma. All Brahma projected out from Param Brahma, like ocean, projection of waves from the ocean. In the same way, millions, countless Brahma, they are projections from Param Brahma. This is important to understand. Okay, all right. Then our ignorance, with the help of Brahma consciousness, Vishnu consciousness, Shiva consciousness, wisdom and mind, Chitta, ego, with them is creating a lot of drama, illusion. That your height is this, your mass, weight, volume is this is your photo, this is picture. In fact, each of you is potentially vast and infinite. Paramahansa Yogananda writes in his lessons, in a SRF lessons, you will read in the very beginning, I think the second or third lesson, he has written clearly, body is potentially vast and infinite. Body means which you can see, which you can touch, which you can take photograph. Therefore, head to toes, I represent you in the form of a body. Or any body is stone, any body water, any body tree or animal. Body is potentially vast and infinite. It means I have to accept as a science you as infinite. I don't understand, doesn't matter.
I understand good. I understand or not, become scientist, I have to accept you as infinite. Infinite means all finite things exist in you. All finite things like stars, you can see, that is finite. Sun, moon, that is finite. Sky, everything, what is visible. Therefore, and within you, there exists all infinite, they become one divine form. That we call infinite. We cannot take photograph of infinite. That is vast, beyond. You cannot capture it. You cannot photograph it. Therefore, if I have to see you, I have to look you, that is the infinite. Not only you, any body, H2O, dihydrogen monoxide, is a body. If water is potentially vast and infinite, sucrose, glucose is C6H12O6. This is what is formula in the chemistry. Maybe complete or incomplete, doesn't matter. But somebody has written C6, carbon 6 atom, H12, hydrogen 12, O6, oxygen 6. C6H12O6 glucose is called a body. It is potentially vast and infinite. Okay, all right. Become scientist. Take this thought, idea, concept as a scale. And take it as a scale and try to measure everything with this concept. Then how to do that? It is not easy. First, I am going to give you 5 minutes practice, then I will explain it. Today is the initiation day, is the last. I have to explain you the spinal breathing, how to breathe with the help of your chakra. This I have to explain you. All right. Before that, let us practice few minutes. Before practicing few minutes, I would like to explain in Hindi. When I am explaining in Hindi, please try to feel your head to toes, except it is potentially vast and infinite. It is not limited structure. अच्छी तरह से अनुभव करिए कि आज के कार्यक्रम में हमने इसको लाइव किया है. उसका लक्ष्य ये है, जो 3-4 दिन हमने बताया उसको लाइव नहीं किया था. एक हम कंक्लूजन दें. कंक्लूजन क्या है? हमें सबको शिक्षा लेनी है. हम किसकी शिक्षा लें? किसकी बातों पर चले? अनगिनत शिक्षक हैं. अनेक लोग अपने को बताते हैं कि सबसे बड़े मास्टर हम ही हैं, सबसे बड़े गुरु हम ही हैं, सबसे बड़े शिक्षक हम ही हैं. देखिए हमें नोबेल प्राइज मिला है. देखिए हमने एटम खोज किया है, हमने एंटीबायोटिक्स खोज किया है, हमने सर्जरी खोज किया है, हमने रॉकेट बनाया है, न जाने क्या क्या मैंने किया है. इसे सबसे बड़े शिक्षक हम ही सभी कहते हैं. चलो इसको मान लीजिए, क्योंकि सच ये है प्रत्येक का रचना अनंत और असीम है. जो कहते हैं कि हम ही सब हैं, तो उनको ये भी कहना चाहिए जितने लोग हैं प्रत्येक लोग सभी अनंत और असीम है. अभी अनंत उसमें खिला नहीं है. जैसे बीज में वृक्ष है, अभी बीज से वृक्ष निकला नहीं है. अगर कोई कहता है कि हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, ठीक है, लेकिन ये भी याद रखिए अनंत ज्ञान सब में है. जो हम ही सबसे ज्ञानी है, ये ज्ञान सब में भरा हुआ है, केवल हमारे अंदर ही नहीं है. जैसे समय आएगा उनके अंदर ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा और समय आएगा. जैसे बीज रूपांतरित होता वृक्ष में, ऐसे ही होगा. तब आज हम कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है जो महाअवतार बाबा ने कहा है
कि अपने अस्तित्व की रक्षा करना हमारा लक्ष्य है। अस्तित्व की रक्षा करना एक लक्ष्य है, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि किसी ने पढ़ाया था कि हम मर जाएंगे या मृत्यु लोक होता है, ये पढ़ाया गया। सभी कहते हैं ये मृत्यु लोक है, जानवर मर रहे हैं, पेड़ पौधे मर रहे हैं, सभी तो मर रहे हैं, आदमी भी एक एक करके गायब हो रहे हैं, ये तो मृत्यु लोक है। फिर महात्मा बाबा यह क्यों कहते हैं अस्तित्व की रक्षा करिए? क्योंकि उन्होंने दिखा दिया, देखिए हम जिस शरीर में थे वो शरीर आज तक वही है। अगर वो शरीर आज तक वही है, यही अस्तित्व की रक्षा करना। इसलिए अपने दिमाग में आप रखिए कि मृत्यु कहते हैं कि मृत्यु है, लेकिन और आगे खोज करिए। सच क्या है? सनातन। सनातन क्या है? जो चीज पहले हो, आज है, आगे भी रहेगी, यानी अमरता। इससे जो महात्मा बाबा कहते हैं अस्तित्व की रक्षा करिए, इससे संबंधित कॉन्शियसनेस ज्ञान करिए। और ये ज्ञान है, कैसे पता चलेगा? परम आनंद आएगा। अगर ज्ञान में आनंद नहीं आ रहा है, तभी समझ में नहीं आ रहा कि ज्ञान है ये। इसलिए अस्तित्व की रक्षा करना, संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति, ब्लिस के साथ, परम आनंद के साथ, ये हम सबका लक्ष्य है। जब मर जाएंगे हम, आनंद कहाँ आएगा? मर जाएंगे हम तो जीने का ज्ञान कहाँ है? इससे महात्मा बाबा के अनुसार मृत्यु लोक नहीं है। चलो हम लोग मान लेते हैं, खोजते हैं, हम दिखाते हैं यहाँ पर पानी था, पानी गायब हो गया, पानी मर गया क्या? कहीं नहीं, मरा नहीं, किसी ने पानी को उठा के आग में डाल दिया था, हुआ क्या? पानी भाप बन गया। अच्छा, चलो प्रयोग करते हैं, पानी को आग में डालते हैं, जो भाप बना उसको इकट्ठा करते हैं, वो तो फिर पानी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पानी मरा नहीं था, पानी में हमने गर्मी दिया, पानी उड़ गया, फिर पानी ठंडा हुआ, भाप ठंडा हुआ, पानी बन गया। अब चलिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। पानी के अंदर जो गर्मी उसको खींचा तो बर्फ बन गया। इलेक्ट्रोलिसिस किया, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बदल गया। ये तो जो महात्मा बाबा ने कहा सही लगता है, कोई चीज मरती नहीं। अच्छा, तो इसको अपने ऊपर कैसे सिद्ध करें? जब मैंने पानी पर प्रयोग किया, पानी से घृणा नहीं किया, पानी गंदा है नहीं कहा, पानी छुएंगे नहीं ऐसा नहीं कहा, पानी को देखा, छुआ, उसके गहराई में गया। जब हम अपने अंदर एकाग्र होते हैं तब अपने से निंदा करते हैं। क्या निंदा करते हैं? ये अनुभूति दर्द है, ये थकावट है, जो तरह तरह की अनुभूतियां हो रही हैं अपने अस्तित्व में, ये सारी अनुभूतियां जो भी हो रही है, इस अनुभूतियों को हम सुख और दुख कहते हैं। यही तो गलती है। अगर सुख और दुख कहेंगे तो मृत्यु लोग दिखाई पड़ेगा, तो है क्या ये? सिर से पैर कमली तक ये जो अनुभूतियां हैं, अमरता की अनुभूति हो रही है। तो कैसे माने हम इसको? माने कैसे? प्रयोग करिए, प्रयोग धीरे धीरे करिए। अभी खड़े हैं, बैठे हैं, या लेटे हैं, या चल रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, जितने प्रकार की अनुभूतियां हो रही हैं, इस तरह से उठिए, बैठिए, चलिए, फिरिए, काम करिए कि उन अनुभूतियों को आराम से हम स्वीकार कर सकें। और जब स्वीकार करिए तो उसे अमर तत्व कहिए, सुख दुख न कहिए। क्योंकि महात्मा बाबा कहते मृत्यु लोक है ही नहीं, तो जो अनुभव होता अमर तत्व है। ठीक है, हम अभ्यास करना शुरू किए, तो प्रतिदिन अभ्यास करते करते अब यहाँ तक पहुँच गए कि 24 घंटा खड़े रहिए। जितनी अनुभूतियां होती हैं, आनंद की तरंगे हैं, वो तो शक्ति है, जीवन है, शांति है। अच्छा भाई, फिर 24 घंटा बैठे रहे,
जो अनुभूतियां हो रही वही है। लेटे हैं, काम कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रतिपल जितने तरह की अनुभूतियां हो रही हैं, ये अमरता का अनुभूति है। अभ्यास करते 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 बनत बनत बन जाइए, वहां तक पहुंच गए। इसीलिए हम पृथ्वी पर आए हैं। अभ्यास करिए, घबराइए मत। आपको कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की दिक्कत है, आपके लिए मैंने घर बनाया है, आप आइए। क्रियायोग अभ्यास के लिए आइए और किसी चीज के लिए नहीं। आपके रहने के खाने की जगह बनाए और सम्मान के साथ रखेंगे। इतने प्रेम से न आपको कोई मायके में रखेगा, न ससुराल में, न अपने घर में, न रिश्तेदारी में। कहीं जाइए, जिस तरह सम्मान से प्रेम के साथ हम आपको यहाँ आदर के साथ हम जगह देंगे, गारंटी है कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी है। कहीं रहेगा तो कंडीशन, यहाँ एक कंडीशन है, आप क्रिया योग ध्यान करिए, खाना पीना बाहर ना खाइए, यही खाइए। आपको दिक्कत हो रही, हमसे डायरेक्ट बात करिए, हम आपकी मदद करेंगे। इसे तो अंतर्राष्ट्रीय घर ही बनाए हैं हम आपके लिए। अब कंक्लूजन क्या है? हम बार बार ये कहते हैं, कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन योग की स्थिति की अनुभूति करिए। अगर हम योग की स्थिति की अनुभूति करते तो हम योगी हो जाते। अर्जुना योगी भाव, योगी हो जाइए। योग की स्थिति क्या है? दूरी की शून्यता। हमने कई बार बताया, ABCDEFGHG जो एक एक लेटर है, इन सबके बीच में दूरी अगर है तो ठीक है, तो ए का अर्थ अलग, बी का अलग, सी का अलग, और सबके अलग अलग अर्थ है, अलग अलग भाव है। इसका मतलब दूरी है। अगर दूरी की शून्यता योग की अवस्था, योग की अवस्था को क्या कहते हैं? यही तो सब कुछ है। योग की अवस्था को स्वतंत्रता कहते हैं। योग की अवस्था हो गए तो हम अज्ञानता से स्वतंत्र हो गए, माया से स्वतंत्र हो गए। हम बार बार बहुत दिनों से हम ये दोहराते हैं, ABCDEFGH, आप Z तक आइए, G तक आइए। प्रत्येक अक्षर का अर्थ एक है, उसके पीछे भाव विचार धारणा एक है। या आइए हिंदी का स्वर व्यंजन आ से लेकर के क्षत्रिय ज्ञा तक, जितने भी अक्षर हैं, जितने भी लेटर हैं, सबका अर्थ एक है, सबका भाव एक है। या 2 लेटर को मिलाइए, 4 लेटर को मिलाइए, जो शब्द बने, वाक्य बने, सबका अर्थ एक है। वो क्या है? अमरता। आप इस तरफ दिमाग को ले जाइए। जब दिमाग इस तरफ को ले जाएंगे तब कृष्ण के भक्त हैं, तब हम योग की तरफ उन्मुख हो गए। अगर सब आपस से जुड़े हैं तो एक ही, 2 नहीं है। इसलिए परमहंस से योगानंद अपने लेसन्स में लिखते हैं कि शरीर ये पोटेंशियली वास्ट और इन्फिनिट है। ये शरीर ये सर्वशक्तिमान तत्व शरीर के रूप में है, अनंत ये शरीर के रूप में है, संपूर्ण ज्ञान इस शरीर के रूप में है। इसको परमहंस से योगानंद अपने लेसन्स में भी लिखा है। एक अवेक मूवी है, उसमें भी कहा है उन्हीं के शब्दों में। इसलिए हम सब एक लक्ष्य बनाएं। हम आपको देख रहे हैं, हम आपको क्या कहें? ये आपकी फोटो है, आपकी लंबाई है, आपकी चौड़ाई है, आपका वजन है, ये सब तो मायावी ज्ञान है। तो क्रिया विज्ञान के अनुसार हम आपको क्या संबोधित करें? सर्वव्यापी अस्तित्व, सर्वशक्तिमान अस्तित्व, परम शांति में, परम आनंद में, अमर अस्तित्व आपके रूप में प्रकाशित हो। जब इस तरह से अभ्यास करेंगे तब एक रूपांतरण होगा। रूपांतरण किस तरह का होगा? जो अभी ये प्रचार है कि मृत लोक है, तब पता चलेगा ये अमरता का लोक है, अमर लोक है। ये एक वैज्ञानिक बनिए, इस तरह अभ्यास करके देखिए क्या होता है। तो सच्चा सुख और शांति मिलेगी जिसकी खोज कर रहे हैं।
चलो, एक सम्मानीय एक न्यायमूर्ति जज साहब हैं, हमें अनेक लोगों से परिचय हुआ इस पृथ्वी पर। साइंटिस्ट हैं, अधिवक्ता हैं, न्यायाधीश हैं, प्रोफेसर हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुतों से हुआ। लेकिन एक सम्मानीय जज है, उनका नाम अभी मैंने पूछा नहीं कि हम बताएं कि ना बताएं। उन्होंने हमको एक विजन दिया, जो हम कहते हैं कि हर अक्षर हर शब्द का अर्थ एक है। जैसे पेरेंट्स, माता पिता, या H2O डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, या जल, दोनों का अर्थ एक है। तो अगर कोई उर्दू है, इटालियन है, फ्रेंच है, जर्मन है, अनेक भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाओं में इसी H2O को, जल को अलग अलग तरीके से कहते हैं। तो कैसे सब लोग समझेंगे? जो जापानी भाषा में, जो चाइनीज भाषा में, इटालियन में, फ्रेंच में इस जल को जो कहते हैं उसका अर्थ भी वही है, कैसे लोग समझेंगे? तो क्या मैं सारे भाषाओं को उनके शब्दों की व्याख्या करूं? कर सकते हैं, लेकिन बहुत समय लगेगा। इसे अपने मैंने गुरुदेव से प्रार्थना किया, हम जो कुछ बताते हैं स्वामी गुरुदेव की कृपा से ही है। हमको विजन दिया सम्मानीय जज साहब, आप उनसे मैं पूछूंगा और नाम कहेंगे बताने को तो हम बता देंगे। उन्हें कहा कि इस पर सोचिए, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम एक चीज की। चलो, मैंने H2O को सिद्ध कर दिया। H2O को हम इटालियन में क्या कहेंगे? केमिस्ट्री छोड़िए, हम जर्मन में क्या कहेंगे, फ्रेंच में क्या कहेंगे, जापानीज में क्या कहेंगे, और फ्रेंच भी कई हैं, तो क्या क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे हम? ये बात तो सही है। तब मैंने गुरुदेव से कहा हमारे इस समस्या को दूर करिए। गुरुदेव ने दूर किया था बहुत पहले, हमने आपको बताया भी है, लेकिन हो सकता है कि माया ने भुलवा दिया हो। माया प्रबल अस्त्र है भगवान का, जो भुलाने का काम करता है। भुलाने का काम क्यों करता है इसको बताएंगे बाद में, ये आवश्यक है। हो सकता है कि हम भूल गए हो। आज हम बताने जा रहे हैं हर चीजों का अर्थ आप कैसे निकालिए स्वयं। आप जो भी भाषा जानते हैं उसमें लेटर होगा, लेटर मिलकर शब्द बनते होंगे, वाक्य बनते होंगे, सबका अर्थ एक है। कैसे निकालेंगे? उसके रूट में आइए, उसके जड़ में आइए, पता चलेगा। हाउ टू गेट द रियल मीनिंग ऑफ वेरियस लेटर्स and what sentences. You have to go into the root. I have explained it many times, but because of the Maya, our nature is to forget. I am repeating today again. देखिए, हम किस चीज से बने हैं? एक गोल आकृति का है। देखिए, मुर्गी का अंडा, जो अंडा जितना गोला हो, उसके अंदर का तत्व में आध्यात्मिक शक्ति उतनी ज्यादा होती है। हम लोग जिस चीज से प्रकट हुए हैं, हमारा ओवम एकदम गोला होता है। आप देखिए, अलग अलग चिड़ियों के अंडे का अलग अलग आकार है, कोई लंबा अधिक, कोई कम लंबा। अब मानो कि अपने ओवम को, ओवम क्या होता है? जहां से हम प्रकट हुए, पिता के अंश भी चाहे जो भी हो, लेकिन उसका जो न्यूक्लियस है वो भी गोल होता है। माँ का अंश जो भी है वो गोल होता है। दोनों मिल करके एक गोल आकृति मिली। चंद्रमा गोल, सूरज गोल, पृथ्वी गोल। तो हर चीज का रूट जड़ एक गोल आकृति है। वी आर बॉर्न फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. That structure appears like a round shape. Try to see the various kinds of egg. Some egg you will find more longitudinal. Some egg is more heavy like ostrich.
but some egg is very small and completely round. Let us discover our birth point. From mother, something exists that is the egg, that is complete round. From father, something comes out that is complete nucleus around. If a mother's a round structure, father's round structure, they made together and become one round structure. It means root of each and every creation is circle. Try to get root. I want to know about A. What is meaning of A? What is meaning of B? What is meaning of A? What is meaning of Ka? Try to come to the root. Okay, what is the root? Try to get a structure which is oval in shape, complete circle. Moon, earth, sun, all right. चलिए हम रूट पर आए, जड़ पर आए. प्रत्येक रचना कहाँ से बनी है, उसका मूल आकार क्या है, आप खोज करेंगे, पता चलेगा ये सर्किल है. ये इस सर्किल से हर चीज प्रकट हुआ है, चाहे स्वर व्यंजन हो या चाहे ABCD हो, इसी से प्रकट हुआ है. ठीक है, तो चलिए हम इसमें प्रवेश करें, देखते हैं, तो सबका पता चल जाएगा. रूट क्या है, जड़ क्या है और ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए. इसका हर बिंदु यही आदि है, बिगिनिंग. फिर चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते चलते रुकेंगे नहीं, अंत में फिर वहीं पहुंचेंगे. जब एक ही जगह पहुंचते हैं तो ये बिगिनिंग और एंड, ये दोनों एक ही हो गया. जब बिगिनिंग एंड एक होता है तो उसको कहते हैं सर्वव्यापी. तो सब चीज का रूट जड़ यही स्ट्रक्चर है, जिसको सर्वव्यापकता कहते हैं. आप सर्वव्यापकता से प्रकट हुए हैं. हमारा अस्तित्व सर्वव्यापकता से प्रकट हुआ है. ये पृथ्वी, सूरज, चांद, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सर्वव्यापकता अस्तित्व से प्रकट हुए हैं. Try to think about this circle, each and every point. Try to see here, this is the beginning, B. Keep on moving it. At the last you will find end. Then beginning and end both are the same. And beginning and both are the same. That is called omnipresence. Therefore, I am here. I came out from omnipresence. You came out from omnipresence. Take anything, plant, animal, or moon, a star, sun, earth. They all came out from the omnipresence. All right, this is the root. This is the root. When try to accept this, you will derive meaning of all things. I am not needed. Become free. Try to calculate. Try to discover your own meaning. Okay, all right. Now I am going to discover A or Y. In this A, this is there, this is there, this is there. From here, you can take any part. Therefore, from omnipresence, something came which is called A, which is called Y. Therefore, if you understand or not, if you have become scientist, accept it and follow the practice. If it is wrong, you will find it is wrong. How you will feel it is wrong? First try to feel head to toe. What you feel is an omnipresence consciousness. Head, face, neck, arms, back, chest, abdomen, both legs, feel it more and more. What you feel is an omnipresence consciousness. In omnipresence, there exists all. Within me, you are there. If I criticize me, I criticize you. I cannot do this
it means you are weak. I cannot go there, it means you are crippled. Because within me, you exist. Within me, whole cosmos exists. Therefore, there is only one language, nothing is impossible. अच्छी तरह से याद रखिए, हम आप सब प्रत्येक रचनाएं कहाँ से आई हैं? सर्वव्यापक अस्तित्व से आई हैं। अगर सिर से पैर की उंगली तक सर्वव्यापक अस्तित्व का ये अलौकिक स्वरूप है ये, ठीक है भाई। तो सर्वव्यापकता का मतलब क्या है? इसी में आप हैं, इसी अस्तित्व में संपूर्ण जीव जंतु हैं, वनस्पति जगत है, तारामंडल है, सूरज है, चांद है। अगर हम कहते हैं ये काम नहीं कर सकते हैं तो कमजोरी का निशान है। हमने आपको आपकी इंसल्ट किया कि आप कमजोर हैं। यहां कैसे जाएं, कितना समय लगेगा? हमने काल की अनुभूति की, काल माया है। हमने आपको माया की निगाह से देखा। अगर हमने आपको माया की निगाह से देखा, हमने आपको कमजोर साबित किया, याद रखिए इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? हम जो चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि ये नहीं कर पाएंगे। हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि सिर से पैर की उंगली तक कोई अनुभूति सुख और दुख है। अगर सुख और दुख है तो ही आप हैं। दुख लगता है तो दुख आप है। हमने आपको दुख के रूप में व्यक्त किया। तो संक्षेप में हम क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इन बातों का अंत नहीं है, जिंदगी भर बोलिए अंत नहीं होगा। इसलिए आज से स्वरूप कर लीजिए, सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाइए, इसकी अनुभूति को स्वीकार करिए कि सर्वव्यापकता का अनुभूति है। यही परम शांति है, यही परम आनंद है, यही सब कुछ है। इसी मिलेंगे सबको ही। भगवान राम मिलेंगे, भगवान कृष्ण मिलेंगे, भगवान बुद्धा मिलेंगे, महावीर स्वामी, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद साहब, संत रविदास, और इसी में महाअवतार बाबा मिलेंगे, इसी में लहरी महाशय मिलेंगे, 31 गिरी मिलेंगे, सब मिलेंगे। देखिए ना, सर्वधर्म का एक ही इमेज है। इधर है गुरु नानक देव जी, कबीर साहब, यहाँ तक 31 गिरी, लहरी महाशय, ये सब है। तो आप में ही सब है। आप कितने महान हैं। वैसे अपनी महानता को देखिए, जब आप पैदा हुए बोल नहीं पा रहे थे, अब आप वक्ता हैं। असंभव कार्य संभव हो गया। पैदा हुए थे चल नहीं पा रहे, तब तो आप दौड़ते हैं। आपने असंभव को संभव किया। जब पैदा हुए थे तो कैसा कैसा था, अब कैसे हैं आप? आपने भूल गए कितनी विल पावर का आप में है। ये उस विल पावर उपयोग करके जो आदमी चल ना पा रहा हो, बोल ना पा रहा हो, वो किस रूप में है आज? जब आप पैदा हुए लिख नहीं पा रहे थे, अब तो आप लेखक हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, या परमहंस योगानंद हैं, या कोई भी है। ये चीज समझ में आई? आज से अगर आप चाहते हो क्रियाओं का अभ्यास अच्छी तरह से हो, तो सिर से लेकर पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं, इस अनुभूति को स्वीकार करते जाएं कि सर्वव्यापकता की अनुभूति है ये। चलो फिर समझाते हैं। ये समुद्र है, समुद्र में लहर है, हम लहर को छू रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, लहर छोटी है? नहीं, ये लहर समुद्र से जुड़ी है। हम लहर को छू करके, लहर को देख करके हम पूरे समुद्र को देख रहे हैं। आई एम गिविंग वन मोर एग्जाम्पल। Try to stand at the side of ocean. There are many waves. If you are touching a small wave or big wave, what you will say, each and every wave is one with the ocean. When you see one wave is small or large, it is the inseparable part of ocean. What is the ocean? Ocean with wave is one. In this way, you with the omnipresent consciousness is one. From this moment, try to live this. इस क्षण से आप यही अभ्यास करिए। अब आ गया आज अंतिम चीज, स्पाइनल ब्रीदिंग। Now I'm going to explain last thing, spinal breathing.
दिस आई विल नॉट गिव लाइव। इस पैनल ब्रीदिंग को हम लाइव नहीं देंगे। जिसको सीखना हो पावन गंगा के तट पर आए, यहाँ पर सीखिए। आप कहते हैं कि आपके पास किराया नहीं, गरीब है, हमारे पास रहिए। आप गरीब क्यों बने? इसे ये लाइव नहीं देंगे हम। इसको अब हम बिना लाइव के बताएंगे हम, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे हम। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्पाइनल ब्रीदिंग, आई एम नॉट गोइंग टू गिव लाइव because all who are listening, they should create some willpower. Come here. I cannot come here. There is a lot of ticket. I don't have money. I don't have dollar. I don't have things. I don't have rupees to come here. I am poor. All right, come and live with me. How can I live? I have wife and children, mother and father. Bring everybody. If you cannot convince your family members to come and live here and practice this, you cannot find God in this life. You cannot find your real nature, that you are omnipresent. Therefore, I have created, with the help of my Gurudev, I have created international home. You feel you are poor, do not worry, come here and live with me. I will give you better place than what I live. Therefore, now I am going to explain the things, but I will not put this live. अब इसको हम लाइव नहीं देंगे, इसके रिकॉर्डिंग करेंगे हम, लेकिन लाइव नहीं होगा। अगर आप बिना पूछे रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपका अभ्यास होगा नहीं। विदाउट माई परमिशन यू आर रिकॉर्डिंग फ्रॉम यू, नोट इट डाउन, यू कैन नॉट प्रैक्टिस क्रिया योगा। अगर हम बताने जा रहे हैं, हम लाइव नहीं देंगे, आप बैठे बैठे आप रिकॉर्ड करिए, कोई बात नहीं, करिए, आपको क्रिया आएगा नहीं। Become dedicated, do not record it. I will give everybody this recorded, but I will not put this live. आप जो लोग बैठे हैं सबको हम देंगे रिकॉर्डिंग, लेकिन लाइव नहीं करेंगे, इसलिए आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। Let us bow down to our devotion in teaching of Mahatma Babaji, which is transferred to Yogata Lahiri Mahasaya, to Jnanata Yogi, to Paramhansa Yogananda। आइए अपनी भक्ति को नमन करें महाअवतार बाबा में, अपनी भक्ति, उस ज्ञान में भक्ति जिस ज्ञान को ट्रांसफर किया उन्होंने योगाता लहरी महर्षय के ज्ञानाता योगी परमहंस योगानंद के अंदर। अब हम बैठेंगे। नाउ वी विल सिट, ओपन आईज, आंखें खोले। आ